हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के चैप्टर नंबर 2 कम्युनिकेशन स्किल की, यानी संचार कौशल। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, मिस कम्युनिकेशन कैन लीड टू, यानी गलत संचार के कारण हो सकता है, क्या हो सकता है। इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है इसका बी, यानी गलत संचार के कारण गलतफहमी पैदा हो सकती है, क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार के लिए क्या करना चाहिए। द आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर। लिसन एंड टॉक केयरफुली, ध्यान से सुनो और बात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस आर, ऑप्शन है इसमें डीवीडी, सीडी, रैम और रोम या यूएसबी। द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रेस, तनाव क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा या निराशा की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी डेज डज इट टेक्स टू फॉर्म अ हैबिट, आदत बनने में कितने दिन लगते हैं, किसी चीज़ की आदत बनने में कितना वक्त लग जाता है। इसमें लिखा है 10 दिन, 11 दिन, 15 दिन या 21 दिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 21 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फैक्ट्रीज एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, कारखाना अधिनियम कौन से सन में पेश किया गया। इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है इसका ए, 1948, 1948 में हमारा फैक्ट्री एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजेस आर पेड डैश, मजदूरी का भुगतान किया जाता है, कब किया जाता है, मंथली, मासिक, महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ वर्कर contributes to bring the best output by using the available resources, the worker is, जब एक कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम उत्पादन लाने में योगदान देता है तो कार्यकर्ता क्या होता है। इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है इसका ए, वो होता है प्रोडक्टिव, उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपीई मीन्स, पीपीई का मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिव प्रोटेक्टिव इंजन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इंजन, प्रोडक्टिव पर्सनल इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इंजन। इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है बी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय ऑफरिंग, भेंट देकर उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, क्या भेंट देकर बढ़ाई जा सकती है। इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ट्रेनिंग एंड जॉब साइट एक्सपीरियंस, प्रशिक्षण और नौकरी का अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटेक्ट्स हैंड फ्रॉम कट्स, बर्न और हार्म्स लिक्विड्स, हाथों को कटने, जलने या हानिकारक तरल पदार्थों से बचाएं। किस चीज़ के द्वारा हम ये कर सकते हैं, गूगल्स के द्वारा, ग्लव्स के द्वारा, एयर प्लग्स के द्वारा या हेलमेट्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, दस्ताने, ग्लव्स के द्वारा हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दीज इज नॉट अ एंट्री लेवल जॉब आफ्टर आईटीआई फॉर इंटीरियर डिजाइनर्स, इनमें से कौन से इंटीरियर डिजाइनरों के लिए आईटीआई के बाद प्रवेश स्तर की नौकरी नहीं है। स्पेशलिस्ट, इंटर्न, जूनियर इंटीरियर डिजाइन, डिजाइन सहायक। इसमें सही आंसर है ए, स्पेशलिस्ट।
Next question. Question number 13. The quality management system makes use of some tools for problem solving. Which of the following is not one of them? गुणवत्ता प्रबंधक प्रणाली समस्या समाधान के लिए कुछ उपकरणों का प्रयोग करती है। निम्न में से कौन इनमें से एक है? एक नहीं है। The right answer is option number C. 4D and 4S method. Next question. ISO stands for ISO का मतलब क्या है? इंटरनेशनल ऑर्डर फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टेबलाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजर्स फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड, क्या है ये? मेरे से बोला नहीं जा रहा दोस्त से, लेकिन आप बोल सकते हो। ऑर्गेनाइजर्स फॉर स्टैंडर्डाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कहीं ना कहीं मिस प्रिंटिंग है। हाँ, ये डबल बार दो बार लिखा शायद इन्होंने। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। BIS स्टैंड फॉर, BIS का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ब्यूरोस ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, ब्यूरोस ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। द बिजनेस आइडिया शुड, द राइट आंसर इज बी, सॉल्व समवन प्रॉब्लम। व्यापार विचार चाहिए, क्या चाहिए? सॉल्व समवन प्रॉब्लम, किसी की समस्या का समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सोशल मीडिया वी यूज डैश टू कन्वे आवर फीलिंग्स एंड इमोशन। सोशल मीडिया में हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? द राइट आंसर इज, हर कोई जानता है जो फेसबुक व्हाट्सएप यूज करते हैं, इमोजीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। वी सेलेक्ट द डैश इमोजी टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग। इसका राइट आंसर है बी, परफेक्ट। We select the perfect emojis to express our feeling. Next question. We use emojis when, कब? हम उपकाए, जब हम उपकाए गए हैं, जब शब्द हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्राप्त नहीं है, हम लिखना नहीं चाहते हमारे से। नेक्स्ट, इसका सही आंसर है बी, शब्द हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्ड्स आर नॉट इनफ टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। बी, when we strongly feel or react situation or with particular people, we are using our, क्या यूज करते हैं? इमोशंस, हेल्थ, मनी और कुछ नहीं, इमोशंस। राइट आंसर इज ए, इमोशंस। क्वेश्चन नंबर 21। इट इज इम्पोर्टेंट टू, इसका राइट आंसर है ए, एक्सेप्ट, अंडरस्टैंड एंड मैनेज आवर इमोशन। हमारी भावनाओं को स्वीकार, समझें और प्रबंधित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। A person's ability to understand and manage emotions properly is called, किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठीक से समझने और प्रबंधित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? द राइट आंसर इज सी, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक खुफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस हैज, क्या है? द राइट आंसर इज सी, लॉट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज, बहुत सारे सकारात्मक गुण।
when something good happens to us, we feel कैसा महसूस करते हैं? Right answer is D. Positive emotions like happiness. Next question. Question number 25. The first step to manage emotion is to. The right answer is A. Accept and understand emotions. Next question. When we do not express our emotions, we may end up. The right answer is B. Hurting ourselves and others. Next question. Expressing ourselves help. स्वयं को अभिव्यक्त करने से इनमें से किसमें सहायता मिलती है? The right answer is A. Finding solution to deal with negative emotions. Expressing ourselves helps in finding solutions to deal with negative emotions. Next question. If we do not learn how to control, it can spoil relationship. The right answer is D. Anger. Next question. What is the process of formally introducing oneself called? औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हायरिंग, डिसीजन, डिसीजन seeking. Option number C is the same answer. Decision. Next question. A good self introduction will help in making a decision. Chatting, transfer, hiring, family. The right answer is option number C, hiring. Next question. All of us dash on completion of the course. Feel bored, search for jobs, feel relaxable, feel free. The right answer is answer B. Search for job. All of us search for job on completion of the course. Next question. ITI training meet industry professionals during. The right answer is A. Internship and apprenticeship. ITI training meet industry professionals during internship and apprenticeship. Next question. Question number 33. Good self introduction help to make. The right answer is C. Good positive impression. Good self introduction helps to make good positive impression. Next question. Self introduction should show how dash you are. The right answer is option number B, confident. Self introduction should show how confident you are. Next question. A quick summary of yourself is called an. The right answer is C, elevator pitch. A quick summary of yourself is called an elevator pitch. Next question. Introduction Introducing oneself in a smart and powerful way in just 30 seconds is called. The right answer is option number A, elevator pitch. Next question. The most frequently asked question in an interview is. The right answer is A. Tell me about yourself. Next question. Everything about a person on the internet, like profile on Facebook, Twitter, and Instagram, is called. Option: online profile or digital footprint, social media, ecosystem, networking. The right answer is option number A, online profile or digital footprint. Everything about a person on the internet, like profile on Facebook, Twitter, and Instagram, is called online profile or digital footprint. Next question. Question number 39. Identify the professional networking platform from the given option. The right answer is option number C, LinkedIn. Next question. When you explore LinkedIn to know about companies, its employers, and get industry updates,
etc. You are exploring it. The right answer is option number D. As a research tool. Next question. When a person is given information about how he or she is doing in an effort to reach a goal, it is called. The right answer is C. Feedback. Next question. Giving information in a manner that does not attack a person but brings a possible changes to the behavior is called. The right answer is C. Effective feedback. Next question. When your instructor decided to cancel the industry visit, you feel. Right answer is B. Feel disappointed. निराश महसूस. Next question. When others observe you and share what they feel about your performance, they. इसका सही आंसर है डी. Are giving you feedback for improvement. Next question. Question number 45. An employee gets feedback from supervisor, HR and other colleagues too. इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका ए, improve. Next question. Negative feedback is usually given. इसका राइट आंसर देखते हैं. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. कंस्ट्रक्टिवली, रचनात्मक रूप से. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 47. To improve your listening skill and become a better communicator, you need to. The right answer is option number A. Start listening actively. Next question. Question number 48. Your assignment is not like that of the other in your class. Why aren't you studying? Is an example of. इसका सही उत्तर है सी. नेगेटिव फीडबैक. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 49. Giving positive comments followed by suggestions for improvement and closing with positive comments is called. The right answer is Burger Burger feedback technique. Burger feedback technique. Next question. Question number 15. When you provide feedback, tell the listener that you are providing. The right answer is C. Constructive feedback for improvement. Next question. Question number 51. Self reflection is the process of. इसका सही आंसर दोस्तों आपको कमेंट में बताना है. आज के लिए सिर्फ इतना ही. अगले वीडियो में मिलेंगे. उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए. और इसमें हमारी और भी प्ले लिस्ट की वीडियो पड़ी हैं. इससे पहले कि आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं. एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के ट्रेड थ्योरी की. चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.